a very warm welcome to Thorough Newspaper Analysis. Today is 25th of April, and this entire video series is brought to you by LawSikho. Now, as far as the agenda for today is concerned, at the very beginning itself, we're going to have an understanding of an editorial which was published in The Hindu, and the title for the same is Pending Bills, the Issue of Gubernatorial Inaction, Case and its Legacy. Essentially, इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे जो ongoing dispute है between the government of the state of Tamil Nadu and the governor. तो गवर्नर को क्या कर रहे हैं उस स्टेट के, he has been sitting on several bills and वो withhold कर रखा है उन्होंने अपना assent, and the state government has been making grievances with respect to the same. अभी recently state government ने एक resolution pass किया है whereby they've sought directions from the President of India कि आप एक टाइम लिमिट फिक्स कर दीजिए विद इन विच द गवर्नर हैज टू एक्ट. तो इसी के रिस्पेक्ट में जो ऑथर के राइटर हैं उन्होंने कुछ पर्टिनेंट क्वेश्चंस पोज किए हैं विद रिस्पेक्ट टू द वैक्यूम इन द लॉ वेयर बाय द गवर्नर डज नॉट हैव ए टाइम फ्रेमवर्क विद इन विच ही हैज टू एक्ट, एंड एज अ रिजल्ट जो स्टेट की मशीनरी है उसके जो फंक्शनिंग है उसमें काफ़ी सारी बाधाएं आ रही है बिकॉज ऑफ दिस. सो दिस इज गोइंग टू बी फॉलोड बाय आवर न्यूज़ अपडेट सेगमेंट जहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट एज वेल एज रेलेवेंट न्यूज़ अपडेट्स की बात करेंगे बोथ इन द सेगमेंट ऑफ नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल न्यूज़ अपडेट्स. ये वहाँ पर रेलेवेंट है इन दोज ऑफ योर एग्जाम्स वेयर करंट अफेयर्स इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस. एंड thirdly, we discuss important legal updates for the day. So moving on, let's start with the DNA. The title of today's editorial is Pending Bills, the Issue of Gubernatorial Inaction. देखिए essentially the issue that was involved in this particular matter is 6th of April को the governor of the state of Tamil Nadu उन्होंने एक public statement दिया whereby he stated कि अगर state assembly से कोई ऐसा बिल पास हो जाता है जो constitution के limits में नहीं हो and which transgresses the constitutional mandate, तो जो governors हैं उनकी एक responsibility बनती है कि वो matters को अपने हाथ में लें and वो बिल को जो है assent ना दे. Now this triggered a series of political developments and one of which was कि जो state government है उन्होंने एक resolution pass कर दिया whereby they are seeking directions from the President of India that you specify a time period within which the governor has to act whenever any bill is presented to the governor for his assent by the state government. Now in this respect, let's understand two constitutional provisions जिनकी अंडरस्टैंडिंग हमें ये समझने में मदद करेगी कि whether ये जो रेजोल्यूशन है ये लीगल है कि नहीं है and what is the constitution, what does the constitution say with respect to the power of the governor. तो देखिए पहला जो हमारे पास आर्टिकल आता है इस रिस्पेक्ट में दैट इज आर्टिकल 355. ये आर्टिकल एसेंशियली प्रोवाइड करता है कि यूनियन गवर्नमेंट जो है वो कुछ इवेंचुअलिटीज में स्टेप कर जाएंगी जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके शूज में, एंड द यूनियन गवर्नमेंट इज गोइंग टू इंटरवीन इन द मैकेनिज्म और मशीनरी एंड फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. और वो कब कब होगा? wherever there is an external aggression or situation of internal disturbance, or when the central government feels the need that in order to ensure that the state government or the government of every state it is carried on in accordance with the provision of the Indian Constitution, there is a need for the government to intervene, then the government is within its legal mandate to do so. तो एसेंशियली ये आर्टिकल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को एक पावर देता है कि जब भी कोई स्टेट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के मैंडेट के अंदर कैरी आउट नहीं हो रही है तो द यूनियन गवर्नमेंट कैन स्टेप इनटू द शूज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्राउंड्स जहाँ पे कि यूनियन गवर्नमेंट जो है वो प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज कर सकती है, एंड यही ग्राउंड हमारी डिस्कशन के पर्पसेस के लिए रेलिवेंट है. नाउ वी प्रोसीड विद आर्टिकल 200 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 200 एसेंशियली प्रोवाइड करता है फॉर मैकेनिज्म टू गिव असेंट टू द बिल बाय द गवर्नर्स. तो ये आर्टिकल ये कहता है कि जब भी किसी स्टेट गवर्नमेंट ने कोई लॉ को या किसी बिल को पास कर दिया है एंड फिर वो प्रेजेंट होता है बिफोर अ गवर्नर फॉर हिज असेंट, तो उस रिस्पेक्ट में क्या क्राइटेरिया होगा, गवर्नर को कैसे एक्ट करना होगा. तो देखिए गवर्नमेंट के पास ब्रॉडली 3-4 ऑप्शंस होते हैं. पहला तो गवर्नर हैज टू गिव हिज असेंट टू द बिल. सेकेंडली द गवर्नर कैन विदहोल्ड हिज असेंट. थर्डली द गवर्नर कैन रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. अब विदहोल्ड की सिचुएशन में गवर्नर क्या कर सकता है, गवर्नमेंट जो है वो जो बिल है उसको रिकंसिडरेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट के लिए प्रेजेंट कर सकता है.
उस सिचुएशन में स्टेट गवर्नमेंट को गवर्नर कैन राइट अ मैसेज that these provisions of the bill or the entire bill it needs reconsideration and these are the amendments that I propose. अब जो state government है वो उन amendments पे act भी कर सकती है and it can choose not to act on the amendments that have been proposed by the governor. अगर स्टेट गवर्नमेंट फिर से वो बिल अगर गवर्नर के सामने रख देती है फॉर हिज एसेंट whether with or without the amendments, तो गवर्नर इज ड्यूटी बाउंड टू गिव हिज असेंट. अब यहाँ से हमें ये पता चलता है कि गवर्नर के पास ऐसा ऑप्शन नहीं है कि वो किसी भी बिल पर ही कैन सिट डाउन ऑन दैट एंड इनडेफिनिट अमाउंट ऑफ पीरियड के लिए ही कैन विदहोल्ड हिज असेंट. दैट पावर इज नॉट गिवन टू द गवर्नर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ इन दिस स्लाइड लेट्स अंडरस्टैंड कि ये जो पूरा डेवलपमेंट हुई है वो लीगल है कि नहीं. तो देखिए, एज फार एज द ऑथर ऑफ दिस आर्टिकल इज कंसर्न्ड, उनका ये कहना है ये जो डेवलपमेंट हुई है, पहला तो इट इज़ फॉर श्योर एन अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट. दिस इज अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था. सेकेंडली उनका ये कहना है कि ये लीगल है दिस रेजोल्यूशन. और वो लीगल क्यों है? क्योंकि 200 जो आर्टिकल है वो एक 4 तरीके बताता है गवर्नर को कि इधर यू गिव योर असेंट, यू विदहोल्ड योर असेंट, यू सेंड द बिल बैक टू द असेंबली फॉर रिकंसिडरेशन, or you reserve the bill for the consideration of the president. But inaction of the governor, it is not one of the options under Article 200. तो अगर गवर्नर जो है वो inaction कर रहे हैं, he is not giving assent or not sending the bill for reconsideration, not reserving it for the president's assent or consideration, तो then in such a situation the president वो क्या कर रहे हैं? He is acting outside the limit of the constitution. वो कॉन्स्टिट्यूशन की मैंडेट के दायरे में रहकर ही इज नॉट एक्टिंग. तो देयरफॉर द प्रोविजन और द ग्राउंड दैट इज बीन गिवन अंडर आर्टिकल 355 वो तो अट्रैक्ट हुई कि अपने आप में, विच इज की यूनियन गवर्नमेंट कैन इंटरवीन, क्योंकि the state machinery is not being carried on in accordance with the constitution. स्टेट अपने आप को, अपनी मशीनरी को, अपनी फंक्शनिंग को कॉन्स्टिट्यूशन के मैंडेट के हिसाब से नहीं चला रही है. तो देयरफॉर द इंटरवेंशन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट कैन बी देयर. तो विच मीन्स कि स्टेट गवर्नमेंट अगर यूनियन गवर्नमेंट की या प्रेसिडेंट की इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं इस सिचुएशन में, या प्रेसिडेंट को चाहते हैं कि वो डायरेक्शन दे गवर्नर को, तो ये रेजोल्यूशन इट इज़ बिल्कुल ये लीगल है. अब सेकेंडली आता है क्वेश्चन हमारे पास कि क्या गवर्नर जो है विदहोल्ड कर सकता है किसी बिल को, एंड दैट टू फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम. इसके रिस्पेक्ट में इस ऑथर में आर्टिकल के जो ऑथर है उन्होंने ये कहा है कि एक सिचुएशन जो हमें दिख रही है वो है आर्टिकल 154 की सिचुएशन. आर्टिकल 154 एसेंशियली क्या करता है? इट प्रोवाइड्स दैट द गवर्नर हैज़ टू एक्सरसाइज हिज डिस्क्रिशन ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. अगर गवर्नर अपनी कोई भी एग्जीक्यूटिव फंक्शन को कैरी आउट करता है तो दैट हैज़ टू बी डन ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो आप खुद ही सोचिए, अगर कोई ऐसा बिल है जो कि गवर्नमेंट ने खुद पास किया है एंड दिया है गवर्नर को फॉर हिज असेंट, तो वाई वुड द गवर्नमेंट वांट कि वो जो गवर्नर है वो उसके बिल को विदहोल्ड कर ले और उसको असेंट ना दे? ये तो अनलाइकली है, दिस इज इलॉजिकल. अब इसका एक काउंटर ये आता है कि मे बी गवर्नमेंट ऐसा तब करे जब वंस द बिल हैज़ बीन पास्ड कोई ऐसी सिचुएशंस आती है जो कि गवर्नमेंट को अपने ही जो बिल है पास करे वो उसको रीथिंक करने के लिए मजबूर कर दे, और गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ इसको गवर्नर को असेंट नहीं देना चाहिए और इसको फर्दर एक्ट में तब्दील नहीं करना चाहिए. तो उस सिचुएशन में जो है गवर्नर को वो एड एंड एडवाइस कर सकते हैं कि यू डू नॉट गिव योर असेंट. हावेवर ऑथर का ये कहना है कि श्योरली कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें और भी इन्विजन करा गया होगा इवेंचुअलिटीज जब गवर्नर में भी अपनी असेंट को विदहोल्ड कर सके. तो उसके रिस्पेक्ट में देन द ऑथर इज सेइंग दैट क्लियरली देयर इज अ ग्रे एरिया, एक लैक्यूना है लॉ में, देयर इज अ साइलेंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन. और इसके रिस्पेक्ट में अब हमारी एड जो द सुप्रीम कोर्ट कैन कम टू आवर एड एंड मे बी कोई जुडिशियल इंटरप्रिटेशन हो सकता है यहाँ पे इस प्रोविजन का. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि पास्ट में क्या सुप्रीम कोर्ट के पास कोई ऐसे केसेस आए हैं इस मुद्दे पर. 2 केसेस हैं हमारे पास रेलेवेंट, एक तो 1962 का केस है, एक 1983 का केस है. हावेवर ये दोनों केसेस ही पेरिफेरी टॉपिक्स पे बात करते हैं, इस मेन टॉपिक पे बात नहीं करते, विच इज द जस्टिसिएबिलिटी ऑफ द असेंट और विदहोल्ड ऑफ असेंट ऑफ द गवर्नर. देखिए इसके रिस्पेक्ट में एक केस आता है विच इज पुरुषोत्तम नाम्बो 3 वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला. यहाँ पर जो इशू था वो ये था कि अगर कोई बिल जो किसी गवर्नर के पास गया हुआ है फॉर असेंट एंड उस इंटरिम में अगर स्टेट असेंबली डिसॉल्व हो जाती है तो क्या वो बिल लैप्स हो जाएगा? दिस वाज द इशू. तो क्लियरली इसमें हमारे जो अभी इशू चल रहा है उसके रिस्पेक्ट में तो कोई होल्डिंग नहीं थी. सेकेंडली हमारे पास केस आता है हॉचेस्ट फार्मास्यूटिकल
Limited and others and other versus the state of Bihar and others 1983 का केस है. इसमें जो मुद्दा था, it was with respect to power of the governor to reserve a bill for consideration of the president. तो इस रिस्पेक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्वेश्चन नहीं कर सकता कि गवर्नर ने कौन सी कंसिडरेशन को मद्देनजर रखते हुए कोई बिल है उसको रिजर्व किया है प्रेसिडेंट की consideration के लिए. So Supreme Court cannot go into the question as to whether it was necessary for the governor to reserve the bill for consideration of the president. That cannot be done. So clearly यहाँ पे भी हमारा issue जो है वो address नहीं हुआ है. तो जो author हैं उनका तो ये मानना है कि जो the question of whether the government can challenge the inaction of the governor in a court of law, अगर वो गवर्नर जो है अगर वो इनएक्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं एंड कोई भी जो मेथड है 200 में दिए उसको एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो क्लियरली गवर्नमेंट जो है उनके एक्शन को चैलेंज कर सकते हैं बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ. एंड सेकेंडली उन्होंने ये कहा है कि इसमें जो क्लैरिटी है वो अब सुप्रीम कोर्ट या जुडिशियल इंटरवेंशन के जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के बाद ही आ सकती है. So with this, we've come to an end for the editorial, and this has brought us to the national segment for today with the first update coming in the segment of defense. So this is with respect to the successful trial of ballistic missile defense interceptor from naval platform. So DRDO, which is the Defense Research and Development Organization, and the Indian Navy, they've successfully conducted a trial of the ballistic missile defense interceptor, and this has been done from a naval platform. It is an Indo-atmospheric interceptor missile that was tested off the coast of Odisha. Moving on to the next update. This is with respect to the launch of Operation Kaveri. तो देखिए हाल ही में सूडान में एक कॉन्फ्रंटेशन चल रही है और ये जो कॉन्फ्रंटेशन है, ये कॉन्फ्लिक्ट है, it turned into a armed conflict on 15th of April जब एक disagreement हुआ between the military rapid support force and the Sudanese armed forces. तो अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है एंड एज अ रिजल्ट वहाँ पर जो भारतीय हैं सूडान में उनकी सेफ्टी का कंसर्न काफ़ी उठ रहा था. तो उनको इवैक्यूएट करने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने ऑपरेशन कावेरी को लॉन्च किया है एंड अराउंड 300 इंडियंस दे आर स्टक इन वेरियस पार्ट ऑफ द सूडान इंक्लूडिंग द कैपिटल सिटी एंड अदर प्रोविंसेस एज वेल. So the government is making efforts in order to evacuate using Operation Kaveri. Moving on to the next update. This is with respect to Rajesh Kumar Singh, who is a 1989 batch IS officer, assuming the charge as the Secretary of Department for Promotion of Industry and Internal Trade. He has replaced Anurag Jain, who is currently the Secretary of Ministry of Road Transports and Highways. This has brought us to the international segment. This is with respect to an earthquake that struck the west of Sumatra Island. So according to Indonesia's Geophysics Office, the earthquake, which was of magnitude 7.3, it triggered a tsunami warning of around 2 hours, and the tsunami warning, which asked the authorities to immediately instruct residents of the affected areas to move away from the shores, it has now been lifted. According to the Indonesia's Disaster Mitigation Agency, authorities are collecting data from the islands which are closest to the epicenter of the western coast of Sumatra. Moving on, this update is coming from the country of Japan. So Japan has approved the country's first ever abortion pill. See, the health ministry of the country, it has approved the country's first abortion pill. Well, abortion pills, they are widely available in many countries across the globe. The medication, it was not approved by Japanese health ministry so far. And this has brought us to the last segment for today, which is the Legal Updates News Center. The first update is coming from the Honorable Apex Court. So the Supreme Court has held that governors should return bails as soon as possible. The Supreme Court, in the case of Telangana government's plea against the governor, has learnt, or the court has been apprised of the fact that all the bills that had been presented to the governor by the Telangana Assembly, they have now been cleared. The court further observed that the governor should return the bills as soon as possible so as to give time or give meaning to the provisos of Article 200 of the Indian Constitution. We have just dealt with the entire provision in our editorial segment. The name of this particular case is State of Telangana versus Secretary to Her Excellence, the Honorable Governor of the State of Telangana.
Moving on, this update is coming from the High Court of Kerala, which has held that eligibility criteria in prospectus, it can be amended when there is discrimination between similarly situated candidates. So the High Court of Kerala, it has recently held that the amendment of the prospectus, it stands totally in a different perspective when there is a hostile discrimination between or amongst different classes standing on the same footing. If the prospectus, it fixes an eligibility criteria that was violative of Article 14, then the same cannot be said to hold good for everyone to participate in the same manner as provided in the prospectus without amendment. The name of this particular case is Dr. Shalili S. Raju versus the State of Kerala and others, and connected matters. And this has brought us to an end for today's TNA. In case you want to get access to the free study material and the TNA slides that were used in this particular video, please feel free to join our Telegram channel. For the same, you may click on the link that has been provided in the description, or you may scan the barcode here. These are the point of contacts for you to get in touch with LawSikho. Also, the quiz that is based on yesterday's TNA, the link to the same is provided in this video, and I would encourage all of you to please go ahead and attempt the same. Thank you for being with us.